So today we are going to discuss about May-June 2016, variance 22. Complete the table to show the composition and identity of some atoms and ions. Boron, its atomic number is 5, which means it has 5 protons, which means it has 5 electrons because it has 0 charge. Now its nucleon number is 10, which means its mass number is 10. Its atomic number is 5. So 10 minus 5 becomes 5 neutrons. Now the next element is nitrogen. Nitrogen has an atomic number of 7, which means it has 7 protons. Examiner says it has 10 electrons, which means it's 3 electrons gained here, which is why it has 3 minus charge. Opposite charge इस तरह से लिखते हैं -3 charge. Now we have 8 neutrons, we have 7 protons. So 8 plus 7 is basically 15 nucleon number. Now, atomic number 82 is basically lead. If its atomic number is 82, which means it has 82 protons and 80 electrons, meaning it has a charge of +2. Now we have 82 protons. I mean to say 208 nucleon number and 82 proton number. दोनों को subtract करूँगा तो बेटा nucleon number आ जाएगा, which is, I mean number of neutron आ जाएंगे, which is 126. C, atomic proton number is 3, which means इसका atomic number भी 3 होगा. Since it has +1 charge, which means it has 2 electrons. इस एलिमेंट को कहा जाता है लिथियम. Now we have 3 protons and 3 neutrons. So 3 plus 3 is going to be 6 nucleon number. The 5th to 8th ionization energies of 3 elements in the 3rd period of the periodic table are given. The symbols used for reference are not the actual symbols of the elements. State and explain the group number of element Y. The biggest energy gap exists between 7th and 8th. That means शायद यहाँ पर चेंज हो गया है. इसका मतलब first 7 electrons are removed from the valence shell, which is why element belongs to group 17 of the periodic table. तो अब यहाँ लिख दीजिए biggest energy gap exists between 7 and 8 electron. State and explain the general trend in the first ionization energy across the 3rd period. Across the 3rd period, ionization energy or first ionization energy increases. Because shielding remains same. Nuclear charge increases. This increases
nucleus to valence electron attraction. Complete the electronic configuration of element X. One s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p4. Element X, जो बिगेस्ट एनर्जी गैप है वो बिटवीन 6th and 7th है. इसका मतलब यहाँ पर शेल चेंज हुआ है. इसका मतलब फर्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शेल, which is why element belongs to group 16 of the periodic table. और ग्रुप 16 में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत सारे आप रिमूव कर रहे हो, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ये सल्फर ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिमूव होता है. A sample of oxygen exists as a mixture of 3 isotopes. Information about the 2 of these isotopes is given in the table. Calculate the abundance of the third isotope. Okay, 99.76 plus 0.04% is basically how much? 99.76 plus 0.04. So it's going to be 99.8%. अगर मेरे पास 100% abundance थी और मैं उसमें से 99.8% सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आई थिंक मेरे पास परसेंटेज अबंडेंस हो जाएगी 0.2%. The relative atomic mass of the sample of oxygen is 16.0044. Calculate the mass number of the third isotope. You must show you working. Okay. तो AR आपके पास है 16.0044 equals to mass of first isotope कितना है आपके पास 16. Abundance of first isotope आपके पास कितना है 99.76. ये हो जाएगा आपके पास 16 into 99.76 plus mass of second isotope is 17. Abundance of second isotope is 0.04 plus mass of third isotope आपको calculate करना है, which is X. Abundance of third isotope is 0.2 divided by total abundance, which is going to be 100. बेटा यहाँ से आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी 80. यानी atomic mass for the third isotope should be 18. The element in group 17, the halogen and the compound show many similarities and trends in the properties. Some data are given for elements fluorine to iodine. Explain the meaning of the term standard enthalpy change of atomization. Standard enthalpy change of atomization. Enthalpy change occur when one mole of gaseous atom is formed from their elements in their standard states under standard condition
For fluorine and chlorine, the enthalpy changes of atomization are half the value of the bond energies. That's an important statement. For bromine and iodine, the enthalpy changes of atomization are much more than the half values of bond energies. Again, very important statement. Suggest a reason for this difference. तो आप बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेस हैं, तो ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है. This is because fluorine and chlorine are gases while bromine is liquid and iodine is solid. Which is why enthalpy change of atomization are different because of their states. The standard enthalpy change of formation of iodine monochloride is minus 24. Important है. Formation DB. Use information and the bond energy of iodine and chlorine to calculate the ICL bond energy. Okay. So it's basically iodine is reacting with chlorine, converting into ICL, or formation of iodine monochloride is मतलब it has to be 1 mole. If it has to be 1 mole, इसका मतलब मैं इसको भी half करूँगा, मैं इसको भी half करूँगा. Enthalpy change with respect to bond energy is basically reactant minus product. Delta H की value is given, that is minus 24.0. Reactant आपके पास iodine है और आपके पास chlorine है, तो iodine की bond energy को half कर दीजिए आप. Which is 151 divided by 2 plus chlorine की bond energy को half कर दीजिए आप, which is 242 divided by 2 minus product. ICL की bond energy हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको x कर लेते हैं. तो यहाँ से ICL की bond energy आ जाएगी प्लस 220.5 किलो जूल्स पर मोल. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, क्योंकि ये हाफ हो रहा है, इसके बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू को भी हाफ करेंगे. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, इसको हमने एक्स कर लिया. डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, इसको प्लग इन कर दिया, आंसर आ गया. Explain the trend in the boiling point of the hydrogen halides HBr, HCl and HI. तो आप बताइए. As number of electrons increases, strength of van der Waals forces increases. Boiling point increases. Suggest why hydrogen halide HF does not follow the trend in the boiling point as shown by this, because HF exhibit hydrogen bonding.
which is stronger than induced dipole. Induced dipole forces hence more energy is needed to overcome such forces guys. One more thing, induced dipole forces also called van der Waals forces. याद रखिए ठीक है. In an experiment, two of the halogens are represented P2 and Q2. Important है. P2 combines with hydrogen on heating to form Hp, which can easily broken down into its elements. A solution of Hp in water reacts with aqueous silver nitrate to form a yellow precipitate that indicates iodide. इसका मतलब this is iodine. The P2 is iodine. ठीक है. और confirmation किसके थ्रू हो रही है कि that iodide is insoluble in dilute aqueous medium. Now the next part of the question is Q2 combines explosively with hydrogen in sunlight to form H2, and sunlight means chlorine. All right, sunlight हमेशा chlorine के लिए use होता है. इसका मतलब Q2 is chlorine. In order to confirm that, question says which is stable to heat. A solution of H2 in water reacts with aqueous silver ions to form a white precipitate. That's the confirmation. Okay, Q2 is basically chlorine, and it is also soluble in dilute aqueous medium. Hence, proof that P2 is basically iodine, and Q2 is basically chlorine. Hp readily decomposes into its elements when heated, but H2 is stable to heat. Explain this with reference to bond energies. तो आप बताएंगे HQ has shorter bond length, so this makes the bond stronger, while HP has a longer bond length, so this makes the bond weaker. Hence, bond energy is low. Write an equation for the thermal decomposition of HP. ये HP है आपके पास, आप इसको डिकम्पोज करें, it will turn to H2 plus P2. आप इसको इन टर्म्स ऑफ आयोडीन भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होता. एंड इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2HI reversible sign H2 plus I2. Write ionic equations including state symbols for the formation of white precipitates on the addition of aqueous silver ions to aqueous H2. So बेटा silver ions हैं आपके पास, Q negative ions हैं आपके पास, ये दोनों मिलकर बनाएंगे Ag. ये आपके पास क्या है aqueous, ये आपके पास क्या है aqueous, और ये आपके पास क्या है solid. The subsequent dissolving of this precipitate in dilute aqueous medium, हो जाएगा आपके पास AgQ plus 2NH3
So it's going to be AgNH3 taken 2 plus Q minus. Chlorine reacts directly with many elements to form chlorides. Three such compounds are NaCl2, AlCl3, and SiCl4. State and explain. State and explain. The pattern shows by the formula of these three chlorides. बेटा देखिए यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4. The number of chlorine atoms increases. So लिखें as the number of valence electrons increases number of chlorine atom increases by 1. आप चेक करें एक क्लोरीन इंक्रीज हो, ठीक है. Write equations to show the behavior of each of these chlorides when added to water. NaCl2 plus H2O, arrow, aqueous magnesium ion, aqueous chloride ion, AlCl3 plus 6H2O, you get Al H2O taking 6 3 plus plus 3Cl negative, SiCl4 plus 2H2O, arrow SiO2 plus 4HCl. आप इसकी जगह पे 6 वाटर वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं, एग्जामिनर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. Mg H2O taking 6 2 plus 2 chloride. ये भी इक्वेशन एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं है, ठीक है. Acidified potassium dichromate 6 can oxidize ethanoic acid, ethane dioic acid. In fact, the relevant half equations are shown. State the overall equation for the reaction between acidified dichromate 6 ions and ethane dioic ions. Obviously, यहाँ पर आप जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जानते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए दोनों तरफ. सॉरी, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बस मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा. तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल हो जाएंगे. आप नोट करें ये 6 हाइड्रोजन आयन 14 हाइड्रोजन आयन से कैंसिल होंगे, तो फाइनल इक्वेशन ये होगी Cr2O72 नेगेटिव प्लस 3H2C2O4 प्लस 6 minus 14, 8 hydrogen ions left, arrow 3CO2 plus 2 chromium 3 plus 7H2. That's my final equation. In an experiment, 0.242 grams sample of hydrated ethane dioic acid was reacted with 0.02 mole per dm cube solution of acidified potassium dichromate 6. 32 cm cube of acidified potassium dichromate 6 solution was required for complete oxidation of ethanoic acid. Calculate the amount in moles of dichromate 6 ions used to react with the sample. तो आपके पास 1000 cm cube है और उसमें मोल्स है 0.020. वो कह रहे हैं 32 cm क्यूब है आपके पास, तो बताइए मोल्स कितने होंगे. ये देखा 6.040 into 10 to the power -4.
फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ इथेन डायोइक एसिड इन द सैंपल। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इन दोनों में 1:3 का रेशियो है। तो अगर आपने इतने मोल्स कैलकुलेट किए थे डायग्रामेट्रिक साइंस के, तो बताइए इसके कितने हैं। 1:3 का रेशियो ले लेते हैं। ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। अगर 6.40 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स दिया है, तो जाहिर सी बात है आंसर होगा 1.92 इंटू 10⁻⁻3। फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड इथेन डायोइक एसिड। गाइस यू नो दिस इज इथेन डायोइक एसिड के मोल्स एंड दिस इज इथेन डायोइक एसिड का सैंपल का मास। दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.242। ये हो जाएगा MR equals to 0.242 divided by 1.92 into 10⁻⁻3। सो आपके पास एक्चुअली MR आ जाएगा 126। अब आपके पास है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन दिस, तो ये हो जाएगा H2C2O4.XH2O equals to 126। आप जानते हैं कि इस पूरे का मास होता है 90, राइट। सो मास ऑफ वाटर ले लेता हूं मैं यहां से 126 माइनस 90, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 36। यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। This question is about molecules with molecular formula C4H8O2. Okay. Give the structural formula of the pair of chain isomers. Guys, chain isomers of formula that are carboxylic acid. Chain isomers of molecular formula 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो CH3 CH2 CH2 CH ब्यूटानोइक एसिड। इसका चेन आइसोमर ये बनेगा CH3 CH CH3 एंड देन COH। फिर वो कह रहे हैं आपसे give structural formulae of a pair of positional isomers of formula that are esters। तो आपको बताया था कि एस्टर्स 2 तरह के होते हैं। एक एस्टर होता है जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, और एक एस्टर होता है जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, और एक ऐसा एस्टर भी होता है जिसमें एक तरफ H होता है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, राइट। याद आया आपको। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक 2 पॉसिबिलिटीज लिख कर दे सकते हैं। तो सबसे आसान है वो बता देते हैं आपको, CH3 CO O CH2 CH3 यानी इथाइल एथेनॉइड, जो कि आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। और ये भी तो हो सकता है CH3 CH2 CO O CH3, that is methyl propanoid। वो कह रहे हैं आपसे जो the reagents and conditions needed to produce one of your ester in one। तो अगर आपको one of your ester प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर इथाइल एथेनॉइड बनाया है, तो मैंने यहाँ से इथेनॉल लेना है और मैंने इथेनॉइक एसिड लेना है। तो मैं लूंगा इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, ये मेरे रिएजेंट्स हो गए। कंडीशन होगी concentrated H2SO4 as a catalyst,
और मैं साथ में हीट भी करूँ. Now the next is the infrared spectra of one of the esters and of another isomer X are shown. X decolorizes bromine water and is not an ester nor an acid. तो अगर X bromine water decolorize कर रहा है इसका मतलब this contains an alkene functional group. Okay, ये एस्टर का फंक्शन स्पेक्ट्रम है और ये एल्कीन का स्पेक्ट्रम है. वो कह रहे हैं एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन दीस टू स्पेक्ट्रा विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ द पीक्स विद वेव नंबर अबव दिस. बेटा पहली तो चीज ये कि आपके पास सी एच है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर, फिर सी डबल बॉन्ड ओ है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर, फिर सी सिंगल बॉन्ड ओ है 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर, सही है. ये बेटा पीक है आपके पास 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे, OH को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो एक आपके पास OH की पीक है which is 3350 सेंटीमीटर इनवर्स. एक आपके पास कार्बोनाइल की पीक है which is 1720 सेंटीमीटर इनवर्स. एक CH की पीक है which is 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. और एक ये वाली पीक है, this peak is 1680 सेंटीमीटर इनवर्स. This is basically alkene. इसको भी लिखिए. Alright. Next question is question number 5. बहुत सारे रिएक्शंस हैं. क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं. Reaction 1 and reaction 2 are can both be carried out using the same reagent. Identify suitable reagents for reaction 1 and reaction 2. आप नोट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल है, ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका मतलब K2Cr2O7 यूज कर रहे होंगे हम अंडर रिफ्लेक्स कंडीशन. ठीक है. रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, इसका मतलब K2Cr2O7 अंडर एसिडिक मीडियम. एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिख सकते हैं. State and explain how the reaction should be carried out to ensure that reaction 2 rather than reaction 1 occur. अगर reaction 2 करना है आपने rather than reaction 1 तो obviously आपने distillation करनी है. मैंने कहा था जब भी आप डिस्टिल की टर्म यूज करेंगे इसका मतलब एल्डिहाइड कलेक्ट करेगा. तो अगर आपको स्टेप 2 करना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो you need to perform distillation. Should be carried out in order to get product in reaction 2. ठीक है. और डिस्टिलेशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सके. दिस नीड्स टू बी डन टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल. तो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द नेसेसरी रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर ईच ऑफ रिएक्शन 3 एंड 4. अब 3 में देखते हैं.
अल्कोहल से एल्कीन बन रहा है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अल्कोहल से OH की जगह Br आ गया, इसका मतलब HBr। तो रिएक्शन 3 के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा। ऑलराइट, और हम कंडीशन हीट यूज करेंगे। और रिएक्शन 4 के लिए आप HBr भी यूज कर सकते हैं, और आप हीट यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह ऑल्टरनेट रिएजेंट भी मैंने बताया था आपके नोट्स में कि अगर मुझे HBr चाहिए तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस NaBr भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो HBr बनेगा और फिर वो HBr रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो ये ऑल्टरनेट रिएजेंट भी लिख सकते हैं अंडर हीट। सही है, पर मैंने डायरेक्ट HBr लिख दिया, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। Complete the reaction mechanism for reaction 5. Include all relevant lone pairs, curly arrows, charges, and partial charges. तो सबसे पहली चीज ये है, ये स्लाइड पॉजिटिव है, ये स्लाइड नेगेटिव है, ये लोन पेयर है। नाउ ये यहाँ से रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। तो आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह का मिलेगा। CH3 CH2 CO नेगेटिव, ये CN और ये H। ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो ऑब्वियसली इसके साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 5 exhibit stereoisomerism. ये chiral carbon atom, which is why draw the two stereoisomers of the conventional way. बेटा conventional way का मतलब 3D डायग्राम। पहले तो मैं 3D स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं ग्रुप्स की एडजस्टमेंट्स करूँगा। ठीक है, ये आपके पास है CH2 CH3, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। CN यहाँ पर अटैच कर देते हैं, OH यहाँ पर अटैच कर देते हैं, H यहाँ पर, H CH2 CH3 OH और ये CN। So this is why a mixture of the two stereoisomers is formed by reaction 5. I think so. This carbonyl carbon is sp2 hybridized and it has a planar geometry. Because of planar geometry, this nucleophile can react with either side of the carbon atom, either from this side or from that side. And therefore, you will get equal molar mixture of isomers. So आप यहाँ लिख दीजिए, carbonyl carbon is sp2 hybridized with planar geometry. Nucleophile
can react with carbonyl carbon from iboside. Hence, equimolar mixture of product is obtained. Guys, we are done with this paper.